Okay, so today we are I already informed you that we will be discussing about Windows function, and this particular Windows functions are one of the major topic where we are like all the product based questions and all the interview question include this particular concepts. Okay, so we will check Windows function and we will also check the use of CT tables. Okay, and we will see some of the concepts how we can implement those. Okay, so let's check one by one what are Windows functions. So guys, we have already discussed about aggregate functions. Okay, and in this particular aggregate functions, what we have learned about sum, we have learned about average, we learned about count, and min and max. Basically that is what. एंड दीज एग्रीगेट फंक्शन व्हाट, ये एग्रीगेट फंक्शंस क्या करता था कि दीज एग्रीगेट फंक्शंस टेक अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज. ओके, ग्रुप ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू. यही होता था, रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू. बिकॉज अगर मुझे एवरेज भी करना है, व्हाट इट विल डू, इट विल सम ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. काउंट भी करना है, इट विल काउंट एवरीथिंग एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू. मिन और मैक्स भी निकालना है, इट विल रिटर्न अ सिंगल वैल्यू. ओके, single scalar value present करता था. And this is basically what we are doing. This Windows function gave us a power. Okay, it gives a power to work with every column. Okay, work with every column. Basically क्या है, just a minute please. So in aggregate function, what we are doing in aggregate function, we are taking the list of records, and using this particular records we are grouping this together, and group करके हम लोग एक single record ला रहे थे. Okay, this is we call it as aggregate function. Okay, aggregate. Okay, now in this particular Windows function, this particular Windows function gives us a flexibility or power to work दिस पर्टिकुलर कॉलम वाइज अपन वर्क करें. मतलब एक सिंगल कॉलम के लिए एक सिंगल डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट कॉलम्स के लिए डिफरेंट वैल्यू. सो इट वर्क्स, और ये बहुत यूजफुल है व्हेन वी टॉक अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस. और अगर मुझे डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी करना है उसके लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड दिस इज हाउ अ विंडोज फंक्शंस वर्क्स. ओके, Windows functions. Okay, now I will tell you about some of the Windows functions. These Windows functions are classified into some Windows functions. These Windows functions are being classified into some types like row number. Okay, so we have a window function called row number. We have another window function called just a minute, rank. Okay, we have a window function called dense rank. The other window function we have is lag and lead, lead. Okay, we have another window function that is entile. So these are different Windows functions, और अपन देखेंगे कि how we are using this window function, and we will also see कि use how to use a aggregate function as a Windows functions. Okay, एक aggregate function को कैसे हम window function की तरह यूज कर सकते हैं, अपन ये भी देखेंगे. Okay, so before that there are three most famous keywords which we will be using. Over is used for creating a Windows function. ये एक तरह का कीवर्ड है जो मुझे SQL प्रोवाइड करता है, और यूजिंग दिस पर्टिकुलर ओवर कीवर्ड वी विल बी स्टार्ट क्रिएटिंग विंडोज फंक्शन. ओके, now we have another keyword called partition by. Okay, so in aggregate function we are always grouping the records, but in Windows function what we will do, we will partition करेंगे. Okay, so used for classifying or bifurcating the data. Okay, and we have another
keyword called order by. So order by is basically ordering it. Okay, let's see how we are going to. So I want to, let's see how. So I will discuss about row number. Let's discuss about row number. So this particular row number, so let's write a query to provide a row number to the employee table. Okay, so query to provide the row number to the employee table. Okay, and we will check कि partition by कैसे work कर रहा है, over and order by कैसे work कर रहा है. Okay, so basically अपन क्या कर रहे हैं, I am selecting star from select star comma, I'm using this particular row number. So row number का syntax will be row underscore number or parenthesis, and after the moment we write over, basically what we are doing, we are creating this as a Windows function over, and in bracket, again in bracket we will be writing partition by. So right now I don't want to do any partition, I just want to order it by salary DESC. Okay, and okay, if I execute it, here you could see that I am getting a record. इसे employee number ID है, और ये employee ID को basically अपन ने क्या किया है, अपने salary wise इसको ऑर्डर कर दिया है. DESC बेसिकली मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है, और उसके हिसाब से मैंने इसको रो नंबर दे दिया. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 and we have 107 records. Okay, and I'm naming this as RM. Okay, now yes, any questions? Okay, so now I want to partition it by using our this particular job ID. Okay, so मुझे क्या मिलेगा, let's suppose different job ID के लिए 1 2 3 4, let's suppose अगर मेरे पास VP कितने हैं, let's so I'm just selecting employee ID comma job ID. Okay, so if I execute it right now, here you could see that, see I have different job IDs. Okay, but I want a classification. I want कि same type के job IDs के लिए same type row number अलग हो, different type के job IDs के लिए row number different हो. Okay, so what I will do, instead of यहाँ पे bifurcate करने के लिए, what I can do, I can partition it by job ID. Okay, and if I execute it, here you could see that right now we have only one account, AC account manager is one, AD is one, but in FII account, here you could see that we have some five different accounts, and for this particular 5 different accounts we have 5 different row number, 1 2 3 4 5. Okay, for program as well, what we are getting 5 different row number, 1 2 3 4 5. Okay, so basically इसमें क्या होता है, for you can see for SA rep REP, it should be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, it's still a 30. So basically what we are doing, we are asking to put a row number. Okay, and we want to put that row number based on job ID. मतलब same job IDs के लिए row number से आप रखो, जैसे ही job ID change हो या different हो, you have to change or start the row ID from the beginning itself. Okay, so this is how we will be using the row ID, order by salary. Okay, now there is a very famous question we are getting every time, query to find the nth largest salary. Okay, so we will look it further on. After that we have another select star, we have another Windows function called rank. Okay, so for this rank, what we need to do, the process of using this is same only. Okay, but this rank will return something else. Okay, so I will be using employee ID. Okay, basically I'm using this particular same, control C control V, and instead of row number I'm adding another column which is called rank. Okay, and I put it in parenthesis over, and partition by job ID, order by salary.
ds, okay, as rank. Okay, if I execute it here, you could see that, see, for okay, I'm just adding another column called salary. It will more give more clarity. Okay, so here you could see that I'm getting a okay, so I'm getting employee id, job id. So let's suppose account के लिए the rank will be 1. Okay, again for रो नंबर भी 1 है, क्योंकि पार्टीशन बाई जब स्टार्ट कर रहे हैं तो अपन ने पार्टीशन किसके बेसिस पे किया है, जॉब आईडी के बेसिस पे किया है। ओके, सो वी आर पुटिंग रैंक्स हेयर। सो यहाँ पे, यहाँ तक तो आप लोगों को सब सेम दिख रहा होगा, बट व्हेन यू कम टू दिस पर्टिकुलर वीपी, सो यहाँ पे रैंक सेम हो गया है, द रो नंबर इज डिफरेंट बट द रैंक चेंजेस। रैंक क्यों सेम है? बिकॉज द सैलरी इज सेम। ओके, सो क्या हो रहा है कि अगर लेट्स सपोज आई एम पुटिंग सम रैंक, और अगर मैं किसी डिपार्टमेंट, लेट्स सपोज मेरा एक क्लास है, क्लास 11th, और इस क्लास 11th में दो बच्चों को हाईएस्ट मार्क्स आया है 95 सो वो वी कांट से कि पहला बच्चा फर्स्ट ये है और फर्स्ट मतलब पहला बच्चा स्टूडेंट ए इज फर्स्ट, स्टूडेंट बी, वी कांट डिसाइड बिकॉज दोनों को तो सेम ही मार्क्स आया। सो रैंक क्या करता है कि अगर अगर लेट्स सपोज हमने पार्टीशन तो कर दिया जॉब आईडी पे, बट अगर उसको सेम टाइप ऑफ ऑर्डर बाई करते समय सेम टाइप ऑफ सैलरी मिल रहा है, व्हाट इट इज डूइंग, इट इज सेइंग ओके दोनों मेरे लिए रैंक 1 ही है। ओके, नाउ लेट्स, इसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फॉर एफ आई आई अकाउंट वी आर गेटिंग 1 2 3 4 5, एंड क्योंकि यहाँ पे सारे सैलरीज भी डिफरेंट है तो द रैंक विल ऑल्सो चेंज। ओके, बेसिकली वी आर रैंकिंग द वैल्यूज। ओके, नाउ इट्स अगेन 1 1 1 2 1 2 3 4। So see this, there is one, this is the one example which I want to show you, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। सो रैंक रो नंबर विल बी 1 2 3 4 5, बट वी हैव 1 एंड वी हैव 2 रैंक, एंड द अगेन जैसे ही मेरे पास 3 लोग आए, लेट्स सपोज थर्ड रैंक के लिए मेरे पास 2 लोग थे, 48 सैलरी विथ 4800, सैलरी विथ 4800, तो वी पुट इट एज 3 3, बट अगेन व्हाट इट विल डू, इट विल स्किप द फोर्थ रैंक। ओके, सो इट रैंक क्या करता है, अगर सेम टाइप ऑफ रैंक उसको मिले ना, इफ it get the same type of rank, it will skip the further rank by the number of repetition। okay, number of repetition, बेसिकली यहाँ पे 3 2 बार है, दैट इज वाई इट इज skipping ओनली 4, बट अगर यहाँ पे 3 3 बार होता, लाइक 4800 4800 4800, अगर ये 3 बार होता तो व्हाट इट विल डू, it will skip the 5 also and the next rank will be 6। okay, so what it will do, it will be something like this, it will be something like this, that if it is 1 and let's suppose we have 10 10 and 20 20 20 and 30, so basically what it will do, for 10 10 it will put 1 1। okay, for 10 it will give 1 rank 1 rank 1, the next rank what 20 को मुझे जो रैंक देना, it will not be 2, it will be 1 1, and as it is repeated by 2 times, 2 will be skipped, the next rank will be 3, again the next rank will be 3 3, and 3 is repeated 3 times, so it will be 3 4 5, and the next rank will be 6, so it will be 1 2 3 4। yes, my voice is breaking, my voice, I'm not sure, is it so? ओके, अभी कैसा लग रहा है, अभी अभी वॉइस कैसा है, हाउ इज इट इज? ओके, बट आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम साइड। ओके, आई विल रीशेयर इट, लेट मी चेक वंस, प्लीज लेट मी नो वंस यू कैन सी माई स्क्रीन। आर यू एबल टू सी इट नाउ? ओके, let's see what is the problem here. I just reshared my screen. Please let me know. Okay, just a minute, please. There is a call. Hello. Yes, प्रशांत। नहीं, एक्चुअली मैं पढ़ा रहा हूँ, बोलिए ना। रूम पे ही हूँ। ठीक है, ठीक। Guys, sorry. You can see my screen now. Okay. Oh, is it better now? Okay.
So I'm talking about rank. Okay, so basically what happens, let's suppose यहाँ पे क्या है 10. So ये क्या करता है, for the SQL engine 10 and 10 is both are equal, so it will put 1 1. Next time when it goes to 2 20, so next time it will not give rank as 2. ये क्या करेगा, क्योंकि 1 दो बार रिपीट हो गया है, so it will be, अगर SQL engine के हिसाब से it will be 1 and it will be 2, and again it will skip the 2 को वो skip कर देगा, and it will skip to 3, and this 3 will be, क्योंकि ये 20 20 20 will be same, it will be 3 3 3, but again what it will do, it will skip 3 के बाद it will skip 4, it will skip again 5, and the next rank will be 6. let's suppose अगर मेरे पास यहाँ पे 30 होता and ये 30 होता और ये 30 होता, so what it will do, it will give 6, it will again give 6, it will again give 6, but the next rank, let's suppose if 40 comes, the next rank will be 6, it will count as 7, it will count as 8, it will count as 9, and the next rank will be 10. So 7 8 9 will be skipped. So this is how we see in this particular rank function. Okay, hope you understand that. Any doubts so far? We can have a discussion, guys. Yes. Okay, so there are scenarios where you don't want, अगर मुझे रैंक यूज करना, रैंक बेसिकली ज्यादा जगह पे यूज नहीं होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में देयर आर few limited questions and scenarios where rank is being used, but इसके बाद we will be learning about dense rank, that is more useful basically. So if it is skipping records, okay, rank कहाँ use हो सकता है, let's suppose we have a table. Okay, we have a table और उस table में missing identities है, मतलब let's suppose somebody has inserted data from 1 to 10, and after 10 it inserted data from some other IDs. So in such condition we will not go there right now. Let's understand first rank, and I will tell you dense rank, then you will get to know, will also tell you where to use or not to use. Okay, thanks. So this is, yes please. It is completely different, Shravan. Group by means we are aggregating, collecting, and or else what we can do, we are summarizing the things. We are not putting anything. यहाँ पे आप देख रहे हो हर डिफरेंट रो के लिए एक डिफरेंट रैंक रो नंबर आ रहा है, बट but in group by we can't do that. Group by means what? Group by basically what we are doing, we are aggregating it. अगर aggregate function use कर रहे हैं, अगर मैंने min निकाला या max निकाला, what it will do, it will check all the list of the data और उसमें से जो भी max record है वो निकाल के दे देगा. Correct? So this is how it is different from there. If you see this particular example now, here we are, what we are doing, we are taking different columns, and we are joining those columns to get a single record. But in Windows function, for a particular different columns, we are getting a different result set, row set, or anything. Okay, so this is how we will be doing in Windows function. So we have another, okay, we have another Windows function called dense rank. Okay, dense rank, and now you will get to know how this particular dense rank is different from this, and this is very useful actually. So if I use it, if I'm just using the same rank function, I'm using the same rank function, and instead of rank function, what I'm doing, I'm just putting dense rank here, dense underscore rank. Okay, and if I run it, here you could see that that I am getting. So I will show you the example. So in this particular example, what we are getting, we are getting 1 1 3 3 3 basically. So what we will do, initially we will get 1 1 because it is same. Now the second we have is 20 20 20 20 20 20. So for this particular, it will not skip. Here it is skipping the values, but it will not skip. It will give 2 2 2. It is more useful actually. Okay, and this is how we rank, we actually rank students. जैसे
एक क्लास में अगर सेम बच्चों का सेम मार्क्स आ गया, हम लोग उस दोनों को सेम रैंक देते rather than अपन स्किप कर दे बीच का, ऐसा नहीं होता ना, वी कांट डू दैट। बट अगर मुझे सिलेक्शन करना हो, हाँ अगर मुझे सिलेक्शन करना हो, सिलेक्शन एज इन लेट्स सपोज मेरे पास लिमिटेड सीट है, मेरे पास 50 बच्चों का ही इनटेक होना है, तो मैं वहां पे रैंक नहीं यूज कर सकता, आई कांट यूज डेंस रैंक देयर, आई हैव टू यूज रैंक, बिकॉज 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 मुझे तो एट द एंड क्या चाहिए, 50 बच्चे का ही एंट्री चाहिए। और अगर मैं डेंस रैंक का, दिस इज डेंस रैंक dr, अगर मैं डेंस रैंक का यूज कर लूं वेयर डेंस रैंक इक्वल टू 50, तो ऐसे कितने बच्चे होंगे कि सेम मार्क्स में हो गए, 1 1 सेम मार्क्स होगा, तो उन्हें भी लेना पड़ेगा, इज इट नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल। Okay, so this is one thing. Again, when we come to 3, it will give it 3 3 3 3. Okay, it will not skip any records and it will give it 4. So this is how we are using dense rank. So if I execute it, I have already executed it. Here you could see that for IT program, for this particular part, just see this row number is clear, 1 2 3 4 5, but for rank what is it is doing, it is doing 1 2 3 3, and 3 is repeated 2 times, so it is skipping 4. Okay, it is skipping 4 and putting the other rank as 5. But when you come to dense rank, it is giving as 1 2 3 3, it will not skipping any rank, it will give 4. Okay, so this is how rank and dense rank work. Okay, guys, understood that? Now we have another uh, Windows function that is called lag. So lag का मतलब ही क्या है, it help us to access the previous records. Okay, it helps to access the previous records. Okay, so let's suppose if select star from, if I want to access the previous salary, let's suppose the in FII account, I just want to do the comparison. So what I am doing for FII, first salary is 9,000 and the second salary is 82,000. Okay, so if I want to access the previous record, so what I will do, I will use the same data, and instead of, and along with dense rank, I will add a विंडो फंक्शन कॉल्ड लैग, और ये लैग फंक्शन क्या करेगा, आपको पहला पिछला प्रीवियस कॉलम का रिकॉर्ड, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा in this particular row number rank, we are not providing any column name in between, but in lag you have to provide it. So let's suppose I want to access the salary, previous salary, so over, so I will be using same this particular job ID, so I will use this control C control V as lag. Okay, and if I execute it, here you could see that I am able to, because for account number there is only one record, so there is no record before this particular before this salary, so that is why it is giving as null. Then for AC manager there is only one record, that is why it is giving as null. For, but when you come to this FI account, the first salary is 9,000, so the previous salary will be null. If it is 82,000, the previous salary will be 9,000. If it is, let's suppose we have to write a query where we are doing the comparison, what is the increase between the previous sales and the this month sale. So what we can do, we can use a lag function, और अपन lag function को use करके क्या करेंगे कि previous month का कितना data है वैसा निकाल सकते हैं, correct? Just a minute please. Okay, so this is how we will be using this particular lag function, and for this lag function, it allows us to access the previous record. Okay, now we have another Windows function called lead. Okay, so lead, यहाँ पे lag क्या कर रहा था, lag आपको previous record fetch करने के लिए दे रहा था, but lead allow you to access the next record. Okay, नेक्स्ट मतलब अगर आपको ये चाहिए कि आप मेरा नेक्स्ट रिकॉर्ड क्या है, आई वांट टू एक्सेस दैट, सो व्हाट वी विल डू, आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर क्वेरी, एंड instead of this particular lag, what I will be using this particular lead function, lead salary over partition by job ID, and I'm naming it as lead. Okay, if I execute it, here you could see
that, see, these functions are very useful. So if you see for VP, the previous data is null, but the next data is 17,000. But for this account, VP account, we have the previous salary, but we don't have the next salary. That is why it is giving as null. Okay. So hope you understand this. For this particular FII account, the previous salary is null, but the next salary is 82,000. For 9,000, okay, 82,000. For 82,000, the next salary will be 78. That is why it is giving as 78,000. So hope you understand this Windows function, guys. Okay. Any questions so far? Yes or no? Okay. So let's. Yes, please. Yes, Murunale. Oh, okay. So what I meant, see. So if you can see this particular video here, I have data like 10. We have two different tens. So for rank, what it will do? For rank, just a minute. I'm just erasing this. Okay. Oh, what happened? Okay. So this is rank. Okay, this is a rank, and this is dense rank. Okay, this is dense rank. So basically what happened, let's suppose we have two different 10. Okay, तो अगर मुझे सेम डेटा है, मैंने पार्टीशन किया है, let's suppose I have partitioned it by my data. So what it will do, it will give it first, it will give 1 1, क्योंकि मेरा पहला रिकॉर्ड इज 1 1. बट फॉर रैंक what it will do, as it 1 is repeated 2 times, it will skip the next record, क्योंकि 1 1 एंड ये 1 2 का प्लेस ऑलरेडी ले चुका है. सो इट विल स्किप द 2 एंड इट विल मूव टू 3. नाउ क्योंकि मेरे पास 3 3 3 20 20 20 तीन बार है, सो व्हाट इट विल डू, it will again give 3 3 3 to all the 20s, but for the next record it will skip all the, क्योंकि कायदे से ये क्या होना चाहिए था, it should be 4, ये होना चाहिए था 5, and the next record should be, the next rank should be 6. so rank ऐसे काम करता है. okay, it will skip the records, whereas dense rank do not skip it. अगर मेरे पास दो सेम तरह के हैं 10 10, it will give 1 1. if 20 20 20, it will give 2 2 2. if 30 30, it will give 3 3 3 3. so it will work like that. okay, so basically क्या कर रहा है इसका, मैं rank, sorry, rank, it will skip the records. okay, whereas dense rank do not skip the records. okay, hope you understand that. Now I just want to find a second or third largest salary. okay, this is a very famous question which is being asked in the interviews. okay, so I want to write a query to find the third largest salary from employees table. okay, department wise. okay, so see how I'm going to achieve that. okay, I'm using select sorry, employee ID, salary. okay, and I'm putting job IDs also here, job ID. okay, and now I want the third largest salary, let's suppose. so for third largest salary, I'm putting it as row number, so whereas I'm using row number over partition by job ID, because I want to partition, मतलब मुझे partition wise उसको segregate करना है by job ID and order by salary, because salary wise भी चाहिए ना, मुझे third largest salary चाहिए, तो मुझे उसी तरह से उसको arrange करना पड़ेगा. okay, and from employees. so now what I am getting, employees as RN. okay, so अभी मुझे क्या मिल रहा है, अभी मुझे सैलरी मिल गया. लेट्स सपोज अकाउंट नंबर के लिए सैलरी ये है, तो उसके लिए RN ये मिल गया. लेट्स सपोज लेट्स चेक दिस पर्टिकुलर FII account. so for FII account I am putting the row number 1 2 3 4 5, but
now I want to access it. I just want the third largest, जितने भी 3 वाले डेटा है ना, जिसका भी third largest salary, I just only want these data. So what I will do, I will put this data into a CT table. So with CT as, and in parenthesis I will put it. So CT table को start करने के लिए अपन क्या करते हैं, we will write as अभी अपन semicolon then with CT as और semicolon के अंदर अपन query रख देते हैं. I'm putting this particular query and select star from CT. अब क्या कर रहे हैं अपन, CT से select कर रहे हैं where RN equal to 3. If I execute it, you could see I'm only getting those details from every different job IDs जिसका salary third largest. Understood? So आप ऐसे ना कोई भी third largest नहीं, यहाँ पे आप nth largest salary भी निकाल सकते हो. Okay, so this is how. Any questions so far? Yes or no, guys? Shravan. Yes. So now I have to write a query. Let's suppose I have a table called select star from order. Okay. So I have this particular order, customer ID, order ID, customer ID 12345 12345. I want to find the last order date. Okay, for each customer. Okay, so write a query to find the last order date of every customer. Okay, so what I will do, अच्छा यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, व्हाट इज योर assumptions guys, let me ask that. प्लीज यू आर फ्री टू. यस, क्या यूज कर सकते हैं, नहीं डेंस क्यों यूज करेंगे, क्यों, रीजन क्या है, डेंस का क्या मतलब बनता है, मुझे तो लास्ट ऑर्डर डेट चाहिए ना. अगर मेरे पास 1 तारीख को मैंने कस्टमर 1 ने 1 तारीख ऑर्डर किया, अगेन कस्टमर 1 ने 7 तारीख ऑर्डर किया, तो डेंस रैंक हाउ इट विल हेल्प. वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड लैग एंड लीड. या तो मैं लैग यूज करूंगा या तो लीड यूज करूंगा. डोंट यू थिंक दैट? यस और नो? ओके. यस. सो यस, दैट इज व्हाट इट दिस विल डू. ये ऑर्डर बाय क्लॉज ही ये काम करता है, जो आप ओवर के अंदर लिखते हो ना कि डेटा को आपको कैसे पार्टीशन करना है और डेटा को कैसे आपको ऑर्डर करना है. दैट इज व्हाट वी राइट इट हियर. नाउ दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. यस प्लीज. We will take customer ID as a partition because we only want कस्टमर के हिसाब से चाहिए ना, जिसके हिसाब से, जिसके लिए आपको डेटा किसके अकॉर्डिंग चाहिए, यू नीड टू चेक दैट. करेक्ट? ओके. सो for what we want order date. Okay, and for order date, let's suppose I'm taking order date and over, and I want to partition it by customer ID. That is how it is a very strong tool I'm saying, customer ID. Okay, and I'm ordering it by order date because I don't want any other. मतलब अगर मैं टोटल अमाउंट से ऑर्डर कर दूं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि मुझे तो ऑर्डर डेट चाहिए मैं असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर करके मैं पिछले वाला डेट निकालना बेसिकली. दैट इज व्हाट आई वांट टू डू. करेक्ट? सो yes please. Correct. So lag and we don't put it. Row and row number rank, and tenth rank will self create those. Okay, but in a lag, what previous data, what कौन से column का previous data आपको चाहिए, that you need to specify. Okay, so if I execute it here, you could see that sorry, something is wrong. Okay, it's orders. So here you could see for customer 1. Okay, so I am just putting the order date also. Order date as previous order date. Okay,
please, whenever you are, I just want to mention that whenever you are using anything in a city ना, always give the LAIs of the name of that particular column. जैसे मान लेते हैं अगर आप, if you are creating this particular Windows functions, so please try to give LAIs for that. Okay, so if I execute it, here you could see that order date. Okay, now for customer one, the initial order date is 2024-01, but the previous order date is null. Now, if I have to write a query for next order date also, or let's suppose we have a table called payments. Okay, so write a query to find the next recurring bill date, okay, from the payments table and okay. So अपन इसमें क्या कर सकते हैं, कैन एनीबॉडी, कोई बता सकता है? अगर मुझे नेक्स्ट रिकरिंग, लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई पेमेंट टेबल होता और उस पर्टिकुलर पेमेंट टेबल में मुझे ये चाहिए, लेट्स सपोज नेक्स्ट रिकरिंग डेट चाहिए कि उस रिकरिंग डेट, एक पर्टिकुलर पेमेंट पर्टिकुलर यूजर के लिए नेक्स्ट रिकरिंग डेट क्या है, so we can use lag here. Correct, I'm not writing a query here right now, but please try to, get something or get some. Okay, now I have a query. I have some modified query. Let's check this particular so here we have write a query to find the nth largest salary. Okay, but what if there are duplicates available in the table? Okay, so basically what I meant is, if I run this particular query, and if you could see this particular this part it, no, okay, this part. If you could check that this particular it part, here we have my first salary is 9,000, my second salary is 6,000, but my third salary is 48,000. But as I am using the row number, it is only returning a single value. कायदे से क्या, मेरे क्वेरी के हिसाब से it should be returning both the records. Okay, I'm just putting here job. Do you understand the question? पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, मुझे ये बताओ, yes or no please. So if I see in this particular IT program, we have row number 1 2 3 4 5 6, rank is also 1 2 3 4 5 6, but यहाँ पे अगर मुझे फोर्थ निकालने बोलता तो रैंक तो यूज नहीं कर सकते, तो रैंक इज नॉट यूजफुल है. ओके, आई एम जस्ट कमेंटिंग रैंक फ्रॉम हियर, so rank is not used. Now if I try to execute it, we have dense rank. So here you could see that dense rank क्या कर रहा है, जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है उसके लिए सेम रैंक्स दे रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी वांट. ओके, एंड इफ वी ट्राई टू मॉडिफाई दिस क्वेरी, अगर इसको थोड़ा इनहांस करना होगा कि फाइंड द nth लार्जेस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाइज वेयर डुप्लीकेट्स अवेलेबल इन द टेबल, डुप्लीकेट अवेलेबल है, एंड थर्ड लार्जेस्ट सैलरी मुझे अगर निकालना है, तो व्हाट आई विल डू, instead of using control C, so instead of using row number, what I will do, I will use dense rank. Okay, dense rank. Okay, and dense rank use करते ही what it will do, if I execute it, here you could see that अब IT प्रोग्राम के लिए मेरे पास थर्ड लार्जेस्ट में दो ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनका थर्ड लार्जेस्ट सैलरी, वी आर गेटिंग दिस रिकॉर्ड, बट इनिशियली वी आर नॉट गेटिंग दैट. ओके, सो दिस इज हाउ अभी. अब डेंस रैंक आप वहां भी यूज कर सकते हो. सपोज यू हैव लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम, student and their marks, and you have to give a rank to them. मतलब सेम मार्क्स वाले को आपको सेम रैंक देना पड़ेगा. यू कांट से दैट कि दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज रैंक 1 अगर सेम मार्क्स है और अगला स्टूडेंट रैंक 2. नो, इट शुड बी रैंक 1. ओके, so for such condition you will be using this particular dense rank. Okay, any questions so far? Shravan, Ash. Okay, so this is next day. Tomorrow we will do some 5 to 10 questions on this particular row rank this Windows function, and I want you to check what is entile. It's a homework for you guys. Please check what is entile and how we can use this particular entile. Okay. Now I want you to. We will discuss about triggers. Okay. Triggers क्या होता है? We will not talk about the implementation. What is triggers? And
इसके कितने टाइप्स होते हैं, और ट्रिगर के साथ मैजिक टेबल्स क्या होते हैं, और मैजिक टेबल्स के टाइप्स। वी विल ओनली टॉक अबाउट दिस discussion. We will do the discussion here. So basically we have this particular triggers. Let's suppose we have a table, and what type of DML activities we do here, Ashley? कैसे कैसे DML activities करते हैं? Insert, और insert करते हैं, and then update. Okay, update, ठीक है, और क्या करते हैं? डिलीट, लेट्स सपोज डिलीट करते, ये करते हैं ना। सो सीक्वल, यस, सो सीक्वल के लिए सीक्वल के लिए दिस इज अ इवेंट। बेसिकली सीक्वल क्या मानता है कि ये एक इवेंट है, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ इवेंट। क्या है ये? इवेंट, मतलब इंसर्ट, अपडेट करना, डिलीट करना, इट्स अ काइंड ऑफ इवेंट। एंड दिस पर्टिकुलर इवेंट में क्या होता है, जब भी ये इवेंट अपने पास, अपन चीज डिलीट किए और अपन चाहते हैं कि ऐसा काम जब भी हो, और इस इवेंट पे हम कोई स्पेसिफिक टास्क करना चाहते हैं, लेट्स सपोज वी वांट टू डू अ स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ट्रिगर, ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ट्रिगर, ठीक है, सॉरी, एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इवेंट। ये इवेंट के एग्जीक्यूट होते ही हम कुछ स्पेसिफिक टास्क, देयर ओनली a picture, or object, and a concept comes into a play, that is called, okay। अब ये ट्रिगर्स कैसे काम करता है? बेसिकली क्या है कि अगर मुझे, मेरे पास, लेट्स सपोज मेरे पास एक, अब है ना, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, so let's understand what type of triggers we have. So triggers we have is called, we have a for trigger, for, after, and instead of। मेरे पास तीन डिफरेंट ट्रिगर्स है, एंड ये ट्रिगर्स काम कैसे? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो ये ट्रिगर्स, लेट्स सपोज इफ यू आर डूइंग, let's take an example, okay, and in this example is related to creation of a history table या audit table। और इस audit table का काम यही है कि जब भी मेरे मेन टेबल में, लेट्स सपोज मेरे मेन टेबल में जब भी डेटा जाए, ओके, दिस इज माय मेन टेबल, जैसे ही मैंने मेन टेबल में डेटा इंसर्ट किया, व्हाट इट विल डू, इट विल इंसर्ट अनदर सेम रिकॉर्ड। अगर लेट्स सपोज अगर मैंने इसमें कुछ इंसर्ट किया, if I have inserted something here, if I have inserted something here, या deleted or updated, what it will do, the same data, the same data will go to this particular audit table। क्या हम, मैंने क्या अपडेट किया या क्या डिलीट किया, व्हाट विल गो, इट विल गो। एंड इसके लिए हम लोग हर बार कोई मैनुअल एसपी नहीं लिख सकते, ओके। एंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ ट्रिगर इन बिटवीन देम, ट्रिगर। तो ये क्या करेगा कि जैसे ही मैंने कुछ भी इंसर्ट किया मेन टेबल में, द ट्रिगर विल गेट एक्टिवेटेड, and it will load the data in this particular audit table, or audit table या history table, I am calling it as history table, okay। Okay, creation of audit table slash history table, okay। And once this is being created, okay, what we can do, okay, so here comes the trigger। अब ये कैसे होता है, okay। So let's suppose मैंने बताया there are different triggers, like पहला ट्रिगर मैंने बताया फॉर बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही फॉर का मतलब है कि इंसर्ट होते ही, ओके। सो लेट्स सपोज एग्जांपल क्या है, फॉर का एग्जांपल ये हो सकता है कि मेन टेबल से अपने को डेटा डालना है हिस्ट्री टेबल में, ओके। दिस विल बी द एग्जांपल फॉर, मतलब जैसे ही कुछ इंसर्ट हुआ, वैसे ही आप मेन टेबल से डेटा जो आप मेन टेबल में डाले वो हिस्ट्री टेबल में डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज इंस्टेड ऑफ, सॉरी, नेक्स्ट वी हैव इज आफ्टर बेसिकली अपन को मान लेते हैं, अपन को डालना है ऑडिट टेबल में रिकॉर्ड काउंट्स डालना है, तो रिकॉर्ड काउंट्स तो आफ्टर ही होगा ना। वंस द डेटा इज बीइंग लोडेड, वी विल काउंट एंड load the record count in audit table, okay। this is one thing। instead of का काम क्या है आपका कि बेसिकली इट वर्क्स लाइक बिफोर, मतलब लेट्स सपोज बिफोर डूइंग एनी ऑफ द, इंसर्ट करने से पहले या डिलीट करने से पहले या अपडेट करने से पहले, अगर आप कोई काम करना चाहते हो, ओके, इट वर्क्स लाइक बिफोर द execution of trigger, okay। this is one thing। so this is how a trigger works। so basically क्या है, जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड में इंसर्ट करेंगे
इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, सो उस इवेंट पे अगर हम कोई एक स्पेसिफिक टास्क करना चाहते हैं, फॉर डूइंग दैट स्पेसिफिक टास्क वी विल रिक्वायर अ ट्रिगर। ओके, दिस ट्रिगर इज बीइंग क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, फॉर, आफ्टर, इंस्टेड ऑफ एंड क्रिएशन। मैंने तो एक एग्जांपल दे दिया कि एग्जांपल क्रिएशन ऑफ ऑडिट हिस्ट्री। तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, एक मेन टेबल है, डेटा एक ट्रिगर बना के ऐसे डाल रहे हैं। अब ये डेटा डालने से पहले ही एक ये डेटा जो मेन टेबल से हिस्ट्री टेबल में इंसर्ट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, दिस इज बीइंग कैरिड आउट। ये ऑपरेशन हम लोग एक टेबल का यूज करके कर सकते हैं। तो अभी बस ये समझो कि मैजिक टेबल्स क्या होता है। दिस इज अ वेरी गुड टेबल। Let's first understand magic table, and then we will link that कि कैसे magic, this particular magic table works. Okay, so magic table, so we have magic table like inserted. We have two different magic tables. First is inserted magic table and second is deleted magic. ओके, इंसर्टेड एंड डिलीटेड मैजिक टेबल। सो इसका फंडा बस इतना ही है कि लेट्स टॉक अबाउट इंसर्टेड मैजिक। तो नाउ व्हाट वी एम डूइंग, आई एम इंसर्टिंग सम रिकॉर्ड्स है, इंसर्टिंग। ओके, सो आई एम इंसर्टिंग सम रिकॉर्ड। ओके, अगर मैं इस मेन टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो इफ आई एम राइटिंग अ क्वेरी and inserting something in this particular main table, ये directly इसमें insert नहीं होता है। What it will do, it will first load the data into another table that we call it as magic table। तो ये क्या करता है, it will first load the data into this particular magic table। So, okay, so if I'm inserting something, it will first load the data into this inserted tables, and जो data भी हम लोग insert कर रहे हैं, that data again got inserted into this particular main table। Understood, guys? Yes or no? Okay, is it clear? Okay, so this is how it is being inserted। so ये कौन सा केस है, ये केस है insert का, when we are inserting। now when we come to deleted part, delete करते हैं। okay, जब when we are deleting something, what it will do, it will again, if we are running any query and if we are deleting something here, suppose we are deleting, okay, so it will not directly go into this particular table, instead of, so if we are deleting something, deleting from table, okay, so what it will do, just, okay, so if we are deleting something, what it will do, the query is being executed here, and once the data is being deleted, it will go to this particular deleted magic table। okay, deleted magic। understood? so इसमें क्या हो रहा है, जब अपन इंसर्ट कर रहे हैं, so basically, sorry for, it will first hit the query here in the main table, and that particular main table will insert the data to in this particular inserted table। now this is all about inserted and magic table, but अपन एक और ऑपरेशन करते हैं। if you forget, we do operation called update, and update seems like first deleting a record plus inserting a record। ऐसा ही होता है ना अपडेट में, अपडेट ऐसा नहीं होता है। अगर कायदे से सोचे तो what it will do, it will first delete that particular record, and once it is being deleted, it will insert the record। so जो भी deleted records होते हैं, it will go to, all the deleted record will go to this particular deleted table, and uh, all the inserted data will go to this particular, okay, deleted magic tables and inserted magic table। अब okay, understood, guys? Yes or no? Yes, no, you, whenever you are doing anything, आप कोई भी क्वेरी रन, मैजिक टेबल हमेशा सीक्वल इंजन में एग्जिस्ट, ठीक है। सो क्या होता है, अगर आप इंसर्ट कर रहे हो ना, तो all the inserted record will go to that inserted magic table, and it will be there for the execution only। जैसे CTE टेबल कैसे होता था, एग्जीक्यूशन के समय तक ही रहता था, once that is being executed, that is destroyed। समझे क्या बेसिकली क्या है, अपना ये सीक्वल इंजन है। ओके, ये सीक्वल इंजन है। इस सीक्वल इंजन के अंदर अपन ने क्या किया, अपन ने कोई इंसर्ट क्वेरी रन किया, वो इंसर्ट क्वेरी इज इंसर्टिंग सम डेटा इन दिस पर्टिकुलर, मान लेते हैं ये क्वेरी ऑफ एग्जीक्यूशन है ना, नॉट सीक्वल इंजन, इट्स अ क्वेरी ऑफ एग्जीक्यूशन, लेट्स सपोज। ओके, एंड वो क्वेरी एग्जीक्यूट होने समय वो इंसर्ट
किए अपन ने कुछ रिकॉर्ड्स एंड इंसर्ट करते हैं, व्हाट इट विल डू, इट विल लोड द डेटा इन दिस पर्टिकुलर टेबल। उस टेबल में लोड किया, जब तक ये क्वेरी चल रहा है ना तब तक मेरा डेटा एक इंसर्टेड मैजिक टेबल के अंदर रहता है, इंसर्टेड मैजिक टेबल के अंदर रहता है। सो वंस दिस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन गॉट कंप्लीटेड, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, completed, the magic tables got destroyed, मतलब डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। सो बेसिकली अपना अपना मेरा मतलब क्या है कि अगर मान लेते ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा तो हम लोग मैजिक टेबल्स को यूज कैसे करेंगे, आना चाहिए ना, दिस इज द मेन क्वेश्चन। सो ट्रिगर में बेसिकली क्या होता है, लेट्स सपोज अगर मैं कोई ट्रिगर बना रहा हूँ, मान लेते हैं ये मेरे पास एक एक छोटा सा टेबल है, ये दिस इज माय टेबल एंड आई एम क्रिएटिंग अनदर, लेट्स सपोज मुझे टेबल से डेटा डालना है हिस्ट्री टेबल में, ओके, हिस्ट्री टेबल में, एंड उस बिफोर में जो सारा एग्जीक्यूशन हो रहा है ऐसा कुछ हो रहा है। तो पहले मैंने क्या किया, मुझे डालना है हिस्ट्री से डेटा पर्टिकुलर हिस्ट्री टेबल में, और उसके बीच में मैंने एक ट्रिगर बना दिया, जैसे अंडरस्टूड। अगर ये मेरा एक ट्रिगर है, हाँ ये मेरा एक ट्रिगर है, लेट्स सपोज दिस इज माय ट्रिगर। तो ट्रिगर ट्रिगर का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होना चाहिए हमें बनाने कि व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट वी विल टेबल से डेटा कहाँ जाता है, टेबल से लेट्स सपोज यहाँ जाता है, तो टेबल से फर्स्ट डेटा जाता है कहाँ पे, लेट्स सपोज वी आर हिटिंग सम क्वेरी, मान लेते हैं अपन ने कोई क्वेरी रन किया, ये क्वेरी से डेटा इज गोइंग हेयर, ये थोड़ा सा छोटा कर, इट इज द सेम ट्रिगर, I'm talk we are talking about the execution of trigger, that how that is okay। सो बेसिकली क्या होता है, अपन ने क्वेरी रन किया, अब मेरा क्वेरी ऐसा था कि वो डेटा डालेगा टेबल में, ओके ओके, एंड जैसे ही टेबल में उसने डेटा डाला, व्हाट इट विल डू, वी हैव डेटा इनटू द इंसर्टेड टेबल एंड दिस क्वेरी इज स्टिल रनिंग, ओके। तो मैं एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ ट्रिगर का, लेट्स सपोज मेरे इंसर्टेड मैजिक जिक टेबल में डेटा है, ओके। सो मैं क्या करूंगा, आई विल एक्सेस दिस पर्टिकुलर मैजिक टेबल, ओके, आई विल एक्सेस दिस मैजिक table within the execution of the query, the execution of the query, and मैं एक्सेस करूंगा उस मैजिक टेबल को एंड लोड द डेटा इन द हिस्ट्री टेबल, ओके। ट्रिगर का बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ एक ही काम नहीं है, ओके, सिर्फ ऑडिट के लिए, बहुत सारे पर्पसेस के लिए भी यूज होता है, ओके। सो बेसिकली क्या हुआ, क्वेरी आया, टेबल में गया, टेबल विल क्रिएट अ इंसर्टेड एंड दिस पर्टिकुलर, ये बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग इस क्वेरी और इस टेबल के बीच में ना एक ट्रिगर बनाए हुए हैं, व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड अ ट्रिगर हेयर। सो ये ट्रिगर भी जब तक ये क्वेरी रन कर रहा है तब तक ये ट्रिगर क्या किया, ये दिस ट्रिगर स्टार्ट एक्सेसिंग दिस पर्टिकुलर इंसर्टेड मैजिक टेबल, एंड वंस इट use this inserted magic table, it loaded the data into the history table at the same time। so अगर आप यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट, if uh, if you are inserting one record here na, if you are inserting some one record here at the same time, उसी समय the same record will be inserted in the history without a gap, without a lag, nothing, okay। this is how a trigger works, okay। guys, any questions? श्रवण, एक बार और समझा दूं, फिर से बताऊं? Yes, 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 yes. So, guys, actually, I don't have much battery in my laptop. I do not have can we keep it for this session only? We can extend it tomorrow. Is it possible for you guys? Is it okay? Ashley, Yashashvi. Okay. So I will share you the sheets. Okay, please go through that. And this is a very important topic. This will tell. It is asked in many of the interviews question. They ask you about where to use it, how we are using it, how a trigger works. Even though they ask for magic tables, what are magic table, how this particular magic. So have a look about that, okay? So yes, we will discuss it further on tomorrow also. Thank you guys, I'm stopped sharing my, if you have any question please drop it in the chat, I will try to get it. So let's wrap up this call. Thank you, Yashashvi, Shravan, Ashley, Mrunali. If you have any doubt please do ask. Thank you guys, thank you.